Hello friends, this is your friend Bajrang Agarwal who would be taking your accountancy classes. Before we move towards our studies, let's get down to the syllabus. I'm not reading everything, but what is more important is if we just see this line, the emphasis at class 11 is placed on basic concepts. And trust me friends, a lot of students, even at CA final level, they struggle with the basic concepts. You cannot just ratify the basic concepts, possible nahi hai. But don't worry, you are absolutely in safe hands. I believe in digging and digging and digging the concepts like anything, and trust me, you will enjoy it. Okay, fine. Coming back to the point, the emphasis at class 11 is placed on basic concepts and process of accounting, leading to preparation of accounts for sole proprietorship firm. So basically, it's a very easy syllabus. Only we would be dealing with sole proprietorship firm. There would not be any partnership. There would not be any companies accounts. These you would be doing definitely in class 12. So basically for class 11 it's very easy, just basic concepts, and trust me, if your concepts are absolutely in control, nothing to worry. You'll score out of 100, you might even score 100 out of 100. That's a promise. So computerized accounting is becoming popular with the increasing use of computers in business. Keeping this in view, the students are exposed compulsorily to the basic knowledge about computers and its use in accounting in the same year. Well, so I'm not reading anything further. Let's have a quick look at the syllabus, because this syllabus would pave the road for us how we should go. किस टॉपिक पर हमें कितना एम्फसाइज देना है, ये important है. We should know that, and that we should strictly follow the syllabus. So here we are on your screen. Financial accounting, the theoretical framework is approximately 15 marks, and the accounting process is 35 marks. Accounting process is also, if you don't have the basic concepts clear, this is also more or less like theoretical concepts itself. So accounting process plus the framework मतलब ढांचा. जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक ढांचा बनाते हैं, so that is called the framework. If your framework is absolutely strong, the entire pressure of the building is on the framework. So of course we will make sure that the framework is absolutely very strong. And then we need to study the financial statements of sole proprietorship from complete and incomplete records. Complete and incomplete records, basically कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो इट इज लाइक अ पजल. उस पर आपको सीबीआई इंक्वायरी के हिसाब से सोच कर, अच्छा ये ऐसा है, अगर गुड्स इतने रखे हैं गोडाउन पर तो इसका मतलब परचेज इतना हुआ है. यू हैव टू थिंक फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. आपको रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करना है. बट देर आर फ्यू गुड पीपल जो पूरे अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करते हैं. दैट इज कंप्लीट रिकॉर्ड्स. फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कंप्लीट बनाने में स्टूडेंट्स फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी, हम जेम्स बॉन्ड की तरह सोचेंगे. it will not be difficult at all. Financial statements of non-profit organization, this is also going to be very easy. And then computers in accounting. बहुत ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है at class 11, but जितना भी हम पढ़ाई करेंगे we have to be very sure, because it's more about the theoretical aspects and the concepts which would lead you to score good marks in class 12 as well. So let's come down and let's start our class today. So here we are, my friends, a new subject of accountancy. It's a totally new subject, I guess. फर्स्ट टाइम आप क्लास 11 में अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो. कुछ बच्चे नर्वस होते हैं कि यस अकाउंटेंसी, ओ माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट. बट ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी इजी पेपर. वी जस्ट गो सिस्टमैटिकली. योर क्वेश्चन वुड बी, what will this subject teach us, right? What would this subject teach us? I will definitely love to answer that, but before that,
the students who have any sort of fear, no fear when I am near. Is it clear? थोड़ा सा ड्रामेटिक है बट विश्वास करो मजा आएगा. My sincere attempt that you all fall in love with accountancy, because we'll be using a lot of technology and our study method would include a lot of text, pictures, graphics and even videos, so that the class gets interesting and you learn the concepts which I want you to learn the way I want you to learn, and trust me, the way I would want you to learn, you will never ever forget in your life. That's a promise. Accountancy will make you a finance doctor. ये जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में, व्हाट विल दिस सब्जेक्ट टीच मी, अकाउंटेंसी विल डेफिनेटली मेक यू अ फाइनेंस डॉक्टर. यस, दिमाग में घंटी बजी अभी. यू कैन hear the heartbeat of money. When we talk about money, money and accountancy is absolutely related. आप पैसों की हार्ट बीट को सुन पाओगे. इस लेवल का प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा, ये वादा है. देखते रहिए, चलते रहिए, साथ चलते रहिए, बहुत मजा आने वाला है. अकाउंटिंग का मतलब अगर हम रॉ लैंग्वेज में समझें, एक सिंपल भाषा में समझें कि यस, व्हाट इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज नथिंग माय फ्रेंड्स, इट इज जस्ट हिसाब एंड किताब. इट मीन्स कैलकुलेशंस, right? And kitab means books. So all the calculations should go into proper books of accounts. That is what accounting is all about. So can you remember your first accounting days? Maybe किताब आप शायद नहीं मेंटेन करते होगे जब आपको पॉकेट मनी मिलती थी. Each student in their lives, they get pocket money, and mentally they always calculate, okay, I have 10 rupees, okay, I have 20 rupees, okay, I have 30 rupees. For last 3 weeks 10 rupees each मैंने collect किया है, तो I have 30 rupees, and yes, this 30 rupees I'm going to spend on my birthday. Okay, I like collecting coins, I will buy this coins of Bangladesh or coins of Australia. So you have your own choice what you want to do with your money. Okay, I would like to go and have a cake or a pastry. So you keep on calculating and then you keep on recording mentally, and that is where your prime accountancy days started. Even as a kid, ki okay, I need to buy a cricket bat and I have 50 rupees short because the cricket bat is costing 150 rupees and you only have 100 rupees with you. So here are the options where the pocket money can be spent: on clothes, on sweets, on CDs, DVDs, magazines, presents, school cafeteria, shopping center, etc, etc, etc. So this is how, when we know where we are spending the money and when we try to record where our money has gone, that is how basic accounting is all about. पैसा निकल कर कहाँ गया और अगर पैसा गया तो उसके बदले में क्या आया. So it is always, कुछ जाता है तो कुछ आता है, बैलेंस होता है. So we just record the balance, and when we record the balance, वैसे ही आ जाता है कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का. फाइन. नाउ आई वुड लाइक टू, सिंस वी ऑल नो कि we need to be very very strong theoretically, this has been disturbing me. I would just like to know whether it's same with you guys or not. Characteristics, objectives, functions, these three verbs, I would say, they disturb me like anything. When I was a student, I used to memorize everything about characteristics, and the question used to be objectives, and then I used to think whether I should write the same or I should miss, or I should ask my friend, hey, तेरे को मालूम है ये वही लिखना है ना जो objectives था. हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं functions वाला, हाँ अरे. So basically ये confusing है, बट आज हम कोशिश करेंगे कि ये confusion हमेशा के लिए मिटा दिया जाए. Students who have already attended my business studies lecture, I think they should be absolutely sitting with a smile on their face कि yes sir, मुझे पता है, but today we'll try to learn this in a different way. Imagine करो कि आपके घर पर आपकी बहन की शादी है and your dad gives you the responsibility of the food department. So what would be your objective as a brother?
As a brother, your objectives and responsibility is कि yes, my objective is, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेरा एम, मेरा गोल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने मुझे दी है. All the guests who would be coming at my sister's wedding, they should really feel कि wow, मजा आ गया यार, क्या खाना है, क्या वैरायटी है. So basically you would be aiming at the deliciousness of the food. The food should be delicious. The food should be having various types of food. Now ये आपका ऑब्जेक्टिव है. अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको किसी व्यक्ति का रिक्वायरमेंट होगा. यू वुड नीड समबडी. यस, यू वुड बी रिक्वायरिंग अ फंटास्टिक caterer who would complete your objective. Your objective is my guest should be happy, your objective. But for that you need somebody, and when you look for that Mr. Somebody, won't you try to find out the characteristics, the quality of that somebody? क्योंकि अगर जस्ट डायल में फोन करोगे तो हो सकता है 10 केटरर आ जाएंगे, बाबू मुझे काम दे दो, बाबू मुझे काम दे दो, अरे मैं काम करूंगा. सो देयर वुड बी लॉट ऑफ पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड टू वर्क एट योर सिस्टर्स वेडिंग. बट आपके ऑब्जेक्टिव्स को मैच कराने के लिए आप खोजोगे सही कैरेक्टरिस्टिक्स की. देखो भाई, तेरे को चाइनीज बनाना आता है, ओहो तेरे को चाइनीज नहीं बनाना आता भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव तू पूरा नहीं कर पाएगा, प्लीज माफ कर दे मेरे को. So you would look out for the characteristics which would fulfill your objectives. So I think now you understood. Your objective was कि I would serve Italian, I would serve continental, I would serve Chinese. So you would be looking out for a caterer with the following characteristics which match your objectives. Yes, finally Mr. Chhagan Lal is your dream caterer. Mr. Chhagan Lal knows everything. तो आपने छगन लाल जी को अपॉइंट कर लिया. छगन लाल जी को आपने समझाया कि देखो छगन लाल जी, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे बहन के शादी में सब खुश होकर जाए, उन्हें वैरायटी मिले. और देखो छगन लाल जी, मुझे वेस्टेज पसंद नहीं है, वेस्ट मत करना यार, खाना को वेस्ट नहीं होना चाहिए और लोग मेहमान बस उंगलियां चाटते रह जाए. सो आपने अपनी ऑब्जेक्टिव्स मिस्टर छगन लाल महाराज को बता दिया, एंड छगन लाल महाराज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पसंद आए, आपने उन्हें अपॉइंट कर लिया. सो बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपने सही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को अपॉइंट किया है. एंड देन आफ्टर गिविंग हिम द अपॉइंटमेंट, yes, you are working with me my friend Mr. Chhagan Lal, you give him the set of responsibilities. You see, now I have appointed you, now these are your functions, दिस इज द फंक्शन विच यू हैव टू परफॉर्म. ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. अगर आप ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर देते हो तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 100% पूरे हो जाएंगे. आपने मिस्टर छगन लाल को एक स्पेयर यूटेंसिल दिया कि सी यू शुड नॉट वेस्ट ऑयल, प्लीज डंप द ऑयल हियर. आपने मिस्टर छगन लाल को सारे स्कीम समझा दिए. You see, please, when the guest is coming, the breakfast should be served at 8 o'clock. And yes, please be ready. Mr. Chhaganlal, you need to work. You need to work to keep them happy. Mr. Chhaganlal, the dinner time is 8 o'clock. So please, you do not be late. No, no, I am not prepared. And Mr. Chhaganlal said, yes, I will fulfill all the objectives. All the functions which you are giving me, all my responsibilities, I will do. So nothing to worry. So basically, Mr. Chhaganlal would perform all his responsibilities. Mr. Chhagan Lal would do all his functions. For whom? For the person who appointed, for you, for your welfare, for your sister's wedding, so that your objective is absolutely fulfilled. So this is, my friend, the difference between characteristics, objectives and functions. So basically business का objectives होता है. Every business has their objectives. Every business objectives have to be met. So they look for a person, maybe an accountant, with the proper characteristics, and that accountant has been given all the functions. So ये मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ. अगर आप इस तरीके से समझोगे तो आपको पूरी जो थियोरेटिकल बातें हैं वो आगे जब हम लिखेंगे आपको 100% और क्लियर हो जाएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. If you guys remember, we always try to interrelate economics, business studies and accountancy. So coming back again,
What is economics? If I ask you what is economics, economics is the study of economic activity. अब economic activity क्या है? Economic activity वो activity जो पैसे के लिए किया जाता है. पैसे के लिए हम करते हैं business, पैसे के लिए हम करते हैं profession, पैसे के लिए हम करते हैं employment. Business की activity को जब हम record करते हैं वो बन जाता है business transaction. Business जो भी activity करती है we call that as business transaction, right? Business transaction. We would also understand business transaction in detail. We would understand the meaning of transaction in detail. What do you mean by transaction? We would understand that in detail. Just go with the flow. So basically business. Now if I tell you business, there are various forms of business. Sole proprietorship, that is a form of business. Partnership, that is a form of business. Company, that is a form of business. So my dear friends, in class 11 we are not studying about partnership, we are not studying about company accounts, but we are definitely studying about partnership and company in our business studies. But about accountancy we are just concentrating on the sole proprietorship, we are just concentrating on the non-profit organization. So basically a business, the moment a transaction takes place, the accountant needs to record it, and then after recording it you classify it, after classifying it you summarize it. So this is how the process just begins. So business transactions, what can be the various transactions of a business? Basically every business they have their own purchases, every business they have their own sales, they have their expenses. Once you club it together कि हमने कितना सामान खरीदा, हमने कितना goods को बेचा, what were our expenses for selling these goods, what was our expenses, the marketing expense, the packaging expense, the transportation expenses. Once you club it together, and then if you get more money than your expenses, yes, you have made a reasonable amount of profit. If you don't get that money, maybe the outflow was more than the inflow, that means आपने व्यापार में लॉस किया है. So ये बहुत easy है. I think everybody knows what is profit and what is loss. What else we need to do? We need to ascertain the financial position of the business. How do we ascertain that? When we start our business, we have invested some money in the business. The money which we invest in the business is called capital, and with that capital we convert that capital into assets. We buy machinery, we buy land, we buy furniture, we buy different machineries which are required to run the different types of business. So this is called assets. और जो पैसे नगद रह जाते हैं उसे हम कैश इन हैंड कहते हैं. कुछ पैसे को हम बैंक में रखते हैं, उसे हम कैश एट बैंक कहते हैं. कुछ नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इजी है. जस्ट कीप फॉलोइंग मी. हाउ डज मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स हेल्प अस? क्या दरकार है सर? वाई शुड वी मेंटेन अकाउंट्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स? वी कैन जस्ट डू इट, कैलकुलेट, वी कैन जस्ट मेंटली डू इट ना. व्हाट इज, वाई टू हायर एन अकाउंटेंट? व्हाट इज द पॉइंट इफ देयर वाज नो यूज ऑफ कीपिंग अकाउंट्स? एटलीस्ट ये सिलेबस में भी नहीं होता. हम बच्चे, वी वुड हैव बीन एंजॉयिंग, वी वर इन क्लास 11 एंड देयर इज नो सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी बिकॉज वी कैन डू इट मेंटली ना. कोई ऐप नहीं आया क्या सर? देखिए ना, कोई ऐप आ जाए तो अपने आप कर ले. नहीं, अभी तक वैसा कुछ नहीं है. हाउ डज मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट्स हेल्प अस? It helps the management in taking important decisions. See, this is very important. Taking decisions. When you want to take a decision, how do you randomly take a decision? मन में आया, जाओ मैंने तुमसे माल नहीं खरीदना है मुझे. Why sir, आप क्यों मुझसे माल नहीं खरीदोगे? Why are you not taking goods from me? Because I think you are charging me higher. You think you are charging higher, but sir, why don't you please calculate? But you don't have any records. You just think somebody, किसी ने आके आपके कान भर दिए और आपने डिसीजन ले लिया. और do you think कि वो डिसीजन सही होने वाला है? You need to take informed decision. You need to, before you take a decision, you need to compare, you need to check कि okay, for the last 1 year
आपसे हमने इतने बार ये ऑर्डर दिया है, वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर सो मेनी टाइम्स एंड ओके 100 pieces at 7 rupee 50 paise. Okay, so you can just calculate 100 pieces order in January at 7.50 per piece, 125 piece in March at 6 rupees 75 paise, and it carries on like that. And maybe in December total pieces you had purchased was 1000 and the average price was 6.50, and somebody came and told you, no, this vendor is not correct, he is overcharging us, let us buy from somebody at 7 rupee 25 paise, because the person was misguiding you, he just showed you the information of 7 rupee 50 paise and he was trying to impress you by, okay sir, ये 7 रुपया 25 पैसे में दे रहा है सर, ये मोहनलाल ट्रेडिंग कंपनी को छोड़ दीजिए सर, ये चोर है। और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, आपको बस याद आया कि हाँ हाँ जनवरी में शायद हमने 7.5 में खरीदा था, बट दिस मोहनलाल ट्रेडर वॉज एन ऑनेस्ट ट्रेडर, जब प्राइसेस कम हुआ तो ही इवन चार्ज यू 6.75, बट वो बात तो आपको पता नहीं था, आपने बस इम्प्रॉम्प्टो किसी के बात पर सुना और यू जस्ट डिसाइडेड। बिजनेस वैसे नहीं चलता है मेरे दोस्त, अकाउंट्स हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में कि यस हम अपने मन से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, सी दिस इज द एंटायर ईयर, और पूरे साल को हमने लिखा है, देखा है, जज किया है, फिर कंपेयर किया है, एंड यस आई एम टेकिंग अ करेक्ट डिसीजन, क्योंकि मेरे डिसीजन पर बहुत सारे अदर पीपल आर ऑल्सो डिपेंडेंट, द बैंक्स आर डिपेंडेंट, जो आपको लोन देने वाली है, जो आपके इन्वेस्टर्स है वो भी डिपेंडेंट है आपके डिसीजन पर, आप मैनेजमेंट हो, आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो, यू हैव टू टेक correct decisions, and to take correct decisions you need proper support. How did you come to this conclusion? You came to this conclusion because year on year, day by day, minute by minute, whatever transactions took place, even a single piece when it was ordered, one piece when it was ordered, it was involving money, and that one piece order was also maintained and that was included when you took this decision. So एक एक पीस का भी ऑर्डर का कैलकुलेशन आता है, क्योंकि जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जहां बिजनेस में पैसे का आउटफ्लो हुआ, वो ट्रांजैक्शन बना, उसे ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और वो ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना ही करना है। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस को छोड़ दिया, आपके काम को छोड़ दिया, दे वर वर्किंग अंडर यू, बट कोई उसमें कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वी डू नॉट रिकॉर्ड दैट, दैट इज नॉट अ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। करीना कपूर केम टू द ऑफिस to say hello to the boss, we do not record that as an accounting transaction, but the moment Kareena Kapoor came, your boss gifted her a watch of 2 lakh rupees, yes, that is recorded because paise ka outflow hua hai, that is a transaction for the business. But imagine karo, if your boss had given it on personal account, nothing to do with business, that becomes a part of drawing, आप उसे business से क्लब नहीं करते हो। ये हम सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे। So once again I welcome you all, dearest CBSE students, class 11, would you like to win a prize? चलो बहुत देर बात किया हमने, अब आपको मैं कुछ इनाम देना चाहता हूँ। I would like to give you some prize and trust me, मैं दूंगा आपको, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। You need to explain, ये कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस में मैंने लिख रखा है, any guess would do, या you people having smartphones you can just find it out, पर टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा। You need to explain any of them कि क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब है। Just a minute, I am just so sorry. Okay, yes, here we are. You need to explain what does ek hit jau leaf means. Okay, if you cannot answer that, you can answer me te dua, anything, or volunteer. Anybody from the class? Okay, your time is up. Time is very precious. You know what it all means? It all means I love you. I love you explained or written in different languages. You don't trust me? See, here you are. In Afrikaans, ek hai jo leaf. So here we are, friends. So basically, sir, अचानक पढ़ाते पढ़ाते आपको ऐसा क्या हो गया, आपको कहाँ से प्यार आ गए हमारे ऊपर? My dear students, the point is language.
When we speak about accounting, accounting is the language of business. And if different people speak different languages, here we are, somebody is telling ek hai jowli, somebody is saying no no te dua, somebody is saying volum te. Basically, don't you think it all means the same? But still there is so much confusion. So when we talk about business, when we talk about accountancy, accountancy is the language of business. When we compare business balance sheet all over the world, they follow the same language, they follow the same principles. So that if a balance sheet of a company in India is compared to a company in Britain, they are following the same language. It is easy to understand. Okay, I want to take over a company in India, but I am in a Britain. I stay in British. I'm a British resident. So what do? I just compare. It is very easy for me because the language is the same. So we need to understand the language of business is accountancy. So if you want, you can write the language of business. What is the language of business? The language of business is accounts. And the business of the entire world, should they speak in different languages, my friend? Should the business of India and the business of America, they should speak the same language or they should speak the different language? This is for you to decide, but decision ho chuka hai. The language of accounts is same. How it is same, sir? ये कैसे हो सकता है? मैं आपको अभी बता देता हूँ. IFRS, this is being followed all over the world, my friends. International Financial Reporting. So एक body है जो they're planning everything. Yes, the entire corporates all over the world would follow IFRS. India में भी ये लागू होने वाला है. India is following accounting standards, AS, accounting standards. So basically it's the same language followed everywhere. It becomes very easy. So coming down to what is the meaning of accounting? What is the meaning of accounting? Basically, when we speak about accounting, it is all about the money received and the money spent. पैसे आया और पैसे गए. So आना और जाना जो है पैसे की, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं, that helps us to understand the meaning of accounting. Coming down, it's all about recording, it's about classifying, it's about summarizing, and it's about interpretation of transactions and events. Transaction and events. सर कुछ देर पहले आपने ट्रांजैक्शन को तो समझाया था, सर ये इवेंट क्या होता है? Of course, I will come down to that. I will explain you that कि what is the difference between transaction and events. Then some people say कि accounting is an art, some people say accounting is a science, but basically it is an art as well as science. When we record it, we do it in an artistically way, but there is a science behind recording, there is a formula behind recording. Every debit has a corresponding debit has a corresponding credit. That is a very scientific principle which we are going to study in future. So in future मतलब कुछ classes के बाद. So basically accounts एक art भी है और accounts एक science भी है. जब हम उसे एक systematically record करते हैं, एक pattern है record करने का, that is an artistic thing, एक representation, एक beautification. But उसे record करने के पीछे क्या formula है, क्या science involved है, उसे हम science कहते हैं. So let's come down to our next point. अब ये बताओ आप मुझे कि क्या ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, इट्स ऑफ कोर्स, ये मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है. चलो एक बार और टिक करते हैं. टेलीफोन की बातें अगर करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस क्या ट्रांजैक्शन है? हाँ जी है ट्रांजैक्शन. सैलरी आपने किसी को दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ जी है. एमडी ने रिटायर कर लिया, the MD of the office is retiring today, so is it a transaction? No sir, it is not a transaction. There is no involvement of money. सर हाँ हाँ सर, ये आर्ट एंड साइंस का जो आपने बताया ना सर ये पूरी क्लियर नहीं हो पा रहा है सर. ऐसा है? ठीक है. सो मैं कोशिश करता हूँ
कि ये आर्ट एंड साइंस को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ दूसरे स्टाइल पर। एक बात बताओ मुझे, कुकिंग फूड, सर फूड मतलब सर नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन, अच्छा चलो भाई कुकिंग पाव भाजी, ये बताओ आप लोग पहले, कुकिंग पाव भाजी ये एक साइंस है या एक आर्ट है? सर कुकिंग को तो आर्ट बोलेंगे सर। अच्छा एक बात बताओ, आपकी घर पे अगर मम्मी बना रही है तो क्या सेम टू सेम टेस्ट आता है पाव भाजी में? जब भी मम्मी बनाती है सेम टू सेम नमक, सेम मसाला, एकदम एकदम सेम टू सेम टेस्ट आ रहा है? सर कैसी बातें करते हो, खाना जब भी बनता है तो हमेशा थोड़ी ना एकदम सेम टू सेम टेस्ट आ सकता है, कभी नमक कम बेसी तो हो ही सकता है, बट हम लोग मिला लेते हैं सर उसमें, कम बेसी अगर होता भी तो वी मैनेज इट। ओके, सो बेसिकली जब हम आर्ट की बात करते हैं, सो आर्ट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक आर्ट है? हाँ सर ड्राइंग एक आर्ट है। कैन वी हैव द सेम ड्राइंग? अरे सर मूड के ऊपर भी तो फर्क पड़ता है ना, आज मूड अच्छा है तो बहुत अच्छा ड्राइंग बन गया। सो आर्ट मोर और लेस, आर्टिस्टिक बातें जब हम करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट अगर H2O का अगर हम बात करें, H2O इज वाटर, H2O इज वाटर। इंडिया में अगर H2O वाटर है एंड इट टेस्ट H2O, अगर हम एक केमिकल बातें करें तो सेम टू सेम टेस्ट जापान में भी रहेगा, सेम टू सेम टेस्ट अमेरिका में भी रहेगा। H2O, अगर दो हाइड्रोजन एटम्स और वन ऑक्सीजन एटम्स को अगर हम बात करते हैं इट बिकम्स H2O। अगर लेबोरेटरी में अगर हम ये मिलाएं एक, तो इट वुड से टेस्ट द सेम। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे आपको मर्ज करते हैं। ये देखिए, ये माँ की बनी हुई पाव भाजी है और ये मेरी वाइफ की बनी हुई पाव भाजी है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। वन डे माई वाइफ केम एंड टोल्ड मी कि देखो देखो, आप बहुत बोस्ट करते हो, यू ऑलवेज से कि माई मदर पाव भाजी इज द बेस्ट, come on give me a chance, I can make even better than her. So of course I said I don't mind, please try to do it. But trust me friends, my mother since last 35 years she is preparing the pav bhaji and I don't know what magic she does, it tastes absolutely the same. Sir ये कैसे हो सकता है? How can it taste absolutely the same? I'll explain you how it is done. So my wife did it. One fine day it was absolutely great taste. One another day I invited my big boss, it was horrible. I immediately went to my mother, I just asked mom कि mom ऐसा क्या है आपके हाथों में, कोई जादू है कि हमेशा सेम टू सेम टेस्ट, आपने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, अगर मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया तो योर पाव भाजी वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, बट ममा दिस इज एन आर्ट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि फॉर एवरी आर्ट मूड का भी तो बात हो सकता है, आज आपके हाथ में कुछ कुछ नहीं, इज इट समथिंग डिवाइन और मैजिकल? देन यू नो माई मदर एक्सप्लेन मी, नो व्हाट शी टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड बेटा of course making a pav bhaji is an art, of course it is an art, but I know the science, I know the science behind the art. Of course this was really high five, मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया, अरे आर्ट के पीछे साइंस? yes bete, what I do is I do it, I prepare it scientifically, this pav bhaji is prepared scientifically. I said mama how do you prepare pav bhaji scientifically? Then she told me 100 grams of potato, 5 grams of masala, boiled for 20 minutes. Basically what she wanted to explain me was every time whenever she cooked the pav bhaji she had made a formula. Yes, this is the scientific principle which I am going to follow every time. So whenever we follow a scientific principle, a formula every time, the results are bound to be the same. So this is how when we talk about accountancy, we have certain scientific principles, yes we need to follow it. तो जब भी आप उस scientific principles को follow करोगे, if there are 50 students in the class and if they all follow the same principle, सब बच्चों का profit, अगर हम बोलेंगे कि yes students what is the profit which you all got, everybody sitting in the class would say sir
The answer which I got is 50,000 rupees profit. How is it possible that everybody sitting in the class got the same profit? Because they followed the same principles. And if any student mismatched with the principles of accountancy, mismatched with the scientific process which was to be followed, they will, of course, they will not get the answer as 50,000. So this is what I wanted to explain, that accountancy is an art as well as accountancy is a science. Fine. Now let's come down to the definition of accounting which was given by AICPA. Okay. Accounting is the art of, now see, अभी हमने डिस्कस किया आर्ट्स एंड साइंस का. AICPA is defining accounting as the art of RCS. What is RCS? R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing. So accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner. When we say it is in a significant manner, you know, this means कि they are talking about the science. जो manner है, एक significant manner है, कुछ principles है, तो ये arts and science दोनों match हो जाता है यहाँ पर. जब हम एक significant manner का बात करें, एक art आ गया, but एक principles को जो follow करना है, तो ये एक science आ गया. So when we record, when we classify, when we summarize, it is an art, but a significant manner following the certain policies, you're mixing the art and science both. Fine, the definition doesn't end here. In terms of money, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, करीना कपूर आपके ऑफिस में आई, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, you do not record it. Your MD's retirement, you do not record it. In terms of money, and what do you record? Transactions and events. Transactions and events which are, कैसे transactions और कैसे events, which are in part at least of financial character. ये repeat हो रहा है. When we talk about in terms of money and in terms of financial character, it means absolutely the same. And after recording, what do we finally do? We interpret the results thereof. Let's once again go through the definition. बहुत easy है. Theoretical framework को मजबूत करना है हमें. 15 marks would be pocketed immediately. So please put all your attention here just for 2 minutes, and trust me, it is done forever. So accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events. Yes, I needed to explain you transaction and events. Basically जब हम transaction को record करते हैं, उसका जो result होता है ना, end result, उस end result को हम event कहते हैं. That's it. पूरा साल हमने transaction को record किया और end में अगर हमारे पास 50,000 रुपये का profit आया, तो उस transaction के effect को हम event कहते हैं. So basically transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. Results को हम interpret करते हैं. Yes, क्या result रहा at the end of the year? Did we make some money? Did we lose some money? क्या हमारा net profit 20% जो target था, did we get that 20%? Last year we had 15%. This year we had 18% or 20%. So we interpret the results. Coming down to now, मैंने आपको already characteristics, objectives और functions के बारे में बता रखा है. So now we would like to take you to characteristics, functions and objectives, but I think you need a break. So मैं देता हूँ आपको 5 मिनट का break. आराम से पढ़ें. So we come back and meet you after 5 minutes. Thank you very much.
Welcome friends. So we were discussing about characteristics of accounting. We already have discussed it to be art as well as science. I would like to introduce a concept called bookkeeping. Bookkeeping means नाम से ही पता चल रहा होगा कि book keeping basically कैसे books, accountancy के books, accounts related books, transaction took place and you simply record the transaction. You are not allowed or you are not supposed to or you are not qualified enough to interpret the transactions. What you do is you are just a clerk. A clerical level work you need to do is, okay, today such and such purchase took place, you note it down. Today such and such sale took place at such and such price, you note it down. Furniture purchase for 20,000, you note it down. Coolie and cartridge paid 20,000, you note it down. You buy a machinery worth 2 lakh rupees, you note it down. So basically bookkeeping is you just recording the transactions. The moment a transaction takes place, you identify the transaction. Okay, yes, this transaction is worth noting. Yes, there might be a fight between a production manager and a sales officer in the office, but the bookkeeper does not identify that as a transaction to be worth noting. So basically financial transactions are only recorded, and we would just simply study how and what are the process of getting it recorded. So bookkeeper is not an accountant. He is not a qualified chartered accountant, my friends. Bookkeeper is just doing a clerical level of work, which he is just recording the transactions. He is not interpreting. He is not the person who will calculate out of that transactions. Yes, how much profit did we make this year? Or this vendor who is selling me the goods, what is the average selling price of this vendor for the past 3 months? Bookkeeper will not do any calculations. What he can do is you just ask the bookkeeper, hey Ramesh, लास्ट 3 महीने पे हमने मिस्टर बनवारी लाल से कितने सामान कितने गुड्स परचेज किए हैं, मुझे उसका डिटेल्स चाहिए. हाँ हाँ साहब मैं अभी ला के दे रहा हूँ. एंड देन you need to average it out, you need to calculate the price. So bookkeeper does record the transactions only. I believe you have understood. आगे बढ़ते हैं. We were studying about the characteristics of accounting and we have already studied accounting as an art as well as science. Basically characteristics of accounting में क्या हो रहा है, accounting records all the financial transactions only. जैसे मैंने कहा, अगर आपकी employees if they go out on a strike, from tomorrow you are not coming to work, we are not recording it in the accounting. So it is outside the purview of characteristics because accounting का जो character है it depends on पैसा. अगर पैसे की बात है तब तो मुझे disturb करो, वरना मैं सो रहा हूँ, मुझे disturb मत करो. Recording in terms of money, ये बहुत important है. Point number 3, recording in terms of money. All the transactions which take place that has to be brought down to terms of money. Let's say 5,000 piece of shirt to be purchased. So 5,000 pieces of shirt, let's say the price of one shirt is 100 rupee. So 5,000 into 100 rupee. This is called recording it in the terms of money. You will write, definitely you will write shirts purchased 5,000 at the rate of 100 and it becomes, I guess, 5 lakh rupees. So you recorded 5 lakh rupees purchase of shirt.
We will understand it further ki why recording in terms of money becomes very important. We will take a small example. Just let us just simply finish the characteristics first. We will build up the concept very slow and steady. Nothing to worry. Trust me, accounting is wonderful. We all people know accounts right from our पॉकेट मनी डेज. हमें सिर्फ हिसाब करना कि कितने पैसे हमारे पास आए और वो जो पैसे आए वो कहाँ कहाँ गए, उसे सिर्फ क्लासीफाई करना है, अलग अलग हेडिंग्स बनाने हैं. बहुत इजी है. सो जस्ट कुछ टर्म्स हमें समझने हैं. यू विल बी getting to hear some terms for the first time. Nothing to worry, very very simple. चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे कि when we record the in in terms of money, after recording what we do, we classify it. And then where do we classify? We classify it in the ledger. For example, there may be purchases by 10 different people. You might purchase from Banwari Lal, from Chhagan Lal, from Ashish Lal, from Mehra and companies. So these are the 4 vendors from whom you are purchasing. And of course, you might sell it to as many people as you want, as long as they are giving you your selling price. कैश में भी बेच सकते हो और उधार में भी बेच सकते हो. कैश में बेचने को कहते हैं कैश सेल्स, एंड व्हेन वी सेल इट ऑन क्रेडिट इट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स. सो बेसिकली if we want to subdivide, yes, what was our cash sales, what was our credit sales, this is called classifying. Of course, if you are working in a big organization, a big organization would have 20 people, maybe 200 people, and of course salary of Mr. A is 5,000, salary of Mr. B is 8,000. But if you are a management, if you are part of the higher management, you just simply want to know what has been the salary outflow of the complete month. How do you come to know about it? You just ask for the salary classification figure कि yes, ए को भी हमने सैलरी दिया, बी को भी दिया, सी को भी दिया, डी को भी दिया, एक्स वाई जेड इतने लोगों को हमने सैलरी दिया, तो प्लीज़ सैलरी का टोटल मेरे पास लेकर आओ. मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि आपने आशीष को कितना दिया, प्रकाश को कितना दिया, विकास को कितना दिया. मैं एक मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, आई डोंट हैव टाइम. मुझे तो आप बस टोटल करके बता दो कि ये टोटल सैलरी इस मंथ का गया है, सो दैट जब मुझे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो अपनी कंपनी की कि यस, this product I am selling at this price, I am purchasing the raw material at this price, and मेरी operational cost which includes salary, which includes electricity, which includes commission, which includes advertisement, मैं सबको क्लब करके देखूंगा, जोड़ कर देखूंगा. बट क्या एडवर्टाइजमेंट क्या एक ही झटके पे हो रहा? नहीं. बिल बोर्ड्स भी एडवर्टाइजमेंट है, न्यूज़पेपर कटिंग भी एडवर्टाइजमेंट है, रेडियो एफएम पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो भी एडवर्टाइजमेंट है. सो बेसिकली आप सारे ट्रांजैक्शन, जैसे ही पैसा का आउटफ्लो हुआ, आप देख रहे हो कि चलो मुझे लिख लेना है. अगर पैसे की आउटफ्लो नहीं भी हुई है तो भी आपको नोट करना है, बिकॉज दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. इसे हम समझेंगे और डिटेल में समझेंगे. चलिए आगे चलते हैं. देन यू समराइज इट. वी समराइज इट. जैसे हमने क्लासीफाई किया, उसके बाद समराइज करने का मतलब यही है कि मुझे एक एग्जैक्ट टोटल बताओ. एडवर्टाइजमेंट को समराइज कर लो. एडवर्टाइजमेंट आपने रेडियो में किया, एडवर्टाइजमेंट आपने पैम्फलेट्स में किया, जहाँ जहाँ भी एडवर्टाइजमेंट किया, मेरे को एक पर्टिकुलर फिगर बताओ कि सर 5.5 लाख रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए. इस प्रोसेस को हम कहते हैं समराइजिंग. ऑफ कोर्स, वंस all the process of transactions are recorded, we would like to interpret the results. इंटरप्रेट करना हम चाहेंगे कि चलो देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ. कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम? वी वुड मेक अ ट्रेडिंग. ये मैंने जॉइंट में लिख रखा है ट्रेडिंग एंड पीएल. तो पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट. ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको. थोड़ी सी बस ये लास्ट पॉइंट को कवर कर लेते हैं. कम्युनिकेशन. वंस वी मेक आवर trading account, profit and loss account, balance sheet, what we do, we communicate it to whom? Do we communicate? We communicate it to our shareholders.
जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, वी कम्युनिकेटेड टू देम. वी ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू different traders. They may be our creditors, our debtors. We communicated to banks. क्यों सर, बैंक को क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है. बैंक इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो कि जो लोन आपने लिया है उस लोन का सही उपयोग आप कर रहे हो या नहीं. क्या 10 करोड़ रुपए लेकर आप अपनी वाइफ के साथ तीसरा हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो? सो बैंक इज वेरी 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 इंटरेस्टेड पार्टी.